Hello everyone, welcome in RK Tutorials Simdega YouTube channel. I am RK sir. Today we are going to discuss about causative of past perfect continuous tense because previous class we have finished that causative of past perfect tense. So let's start. Rule of distinguish the sentence, that means which type of sentence is called causative of past perfect continuous tense. So that rule is saying that जिस वाक्य के अंत में वाता रहा था, वाती रही थी, वाते रहे थे, रहे, उसे पॉजिटिव और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें पत्र लिखवाता रहा था, हम लोग तुम्हें गाना गवाते रहे थे, राधा तुम्हें कथक नचवाती रही थी। सो whatever I have taken the Hindi example into the sentence, you are listening that वाता रहा था, वाती रही थी, वाते रहे थे. So if you find either of sentence in Hindi, then without hesitation you can say that this sentence belonging from causative of past perfect continuous tense. So please take pen and copy and write down with me how जिस वाक्य के अंत में वाता रहा था, वाती रही थी, वाती रही थी, वाते रहे थे, वाते रहे थे, रहे, उसे causative of past perfect continuous tense का वाक्य कहते हैं। So let's we take some example in हिंदी। जैसे मैं तुम्हें भात पकवाता रहा था, मैं तुम्हें भात पकवाता रहा था, मैं तुम्हें भात पकवाता रहा था, हम लोग तुम्हें गणित बनवाते रहे थे, हम लोग तुम्हें गणित बनवाते रहे थे, तुम मुझे गाना गवाती रही थी, वह तुम्हें पेड़ लगवाता रहा था, वे लोग तुम्हें चित्र बनवाते रहे थे, वे लोग तुम्हें चित्र बनवाते रहे थे, राम तुम्हें मछली पकड़वाता रहा था, वाता रहा था। And again I can say सीता तुम्हें कपड़ा धुलवाती रही थी, सीता तुम्हें कपड़ा धुलवाती रही थी। So that whatever I have taken the Hindi example, end of the sentence you are looking that वाता रहा था, वाते रहे थे, वाती रही थी। Again you can look वाता रहा था, वाते रहे थे, here again वाता रहा था and वाती रही थी। That's why I have told you that जिस वाक्य के अंत में वाता रहा था, वाती रही थी, वाते रहे थे, रहे, उसे causative of past perfect continuous tense का वाक्य कहते हैं। You can look हिंदी एग्जाम्पल, मैं तुम्हें भात पकवाता रहा था, हम लोग तुम्हें गणित बनवाते रहे थे, तुम मुझे गाना गवाती रही थी, वह तुम्हें पेड़ लगवाता रहा था, वे लोग तुम्हें चित्र बनवाते रहे थे, राम तुम्हें मछली पकड़वाता रहा था, सीता तुम्हें कपड़ा धुलवाती रही थी। So if you find like that a sentence in Hindi, then without hesitation you can say that this sentence belonging from causative of past perfect continuous tense. I hope you are able to do. So let's start rule of making sentence. Rule of making sentence is saying that subject plus had been plus making plus object plus V1 plus main object. Already you know that because already we have finished that causative of present tense, so that you are able to make the rule. So let's start the rule. I am writing, please you also write. The rule is that subject plus had been, or we can say had plus been, but you know that each and every sentence we can use the had been. That's why I have written here had been. So that my rule is that subject plus had been plus making plus object, and you know that this object will use for the person. After then V1 is compulsory, each and every causative. After then you can write here main object. So our rule is ready. That means you are looking here subject plus had been plus making plus object plus V1 plus main object. So according to this rule, let's try to
मेक सम सेंटेंस। मैं तुम्हें पत्र लिखवाता रहा था, देन व्हाट विल हैपन, आई हैड बीन मेकिंग यू राइट ए लेटर। मैं तुम्हें पत्र लिखवाता रहा था। इफ आई से दैट, हम लोग तुम्हें पत्र लिखवाते रहे थे, देन व्हाट विल हैपन, वी हैड बीन मेकिंग यू राइट ए लेटर। इफ आई से, तू मुझे पत्र लिखवाता रहा था, देन यू हैड बीन मेकिंग मी राइट ए लेटर। Very simple, only I am changing the subject so that you can do very easy way. If I say वह तुम्हें पत्र लिखवाता रहा था, then he had been making you write a letter. Like that, if I say वह तुम्हें पत्र लिखवाती रही थी, then he had been making you write a letter. This is the letter. Write a letter. If I say वे लोग तुम्हें पत्र लिखवाते रहे थे, then they had been making you write a letter. If I say राम तुम्हें पत्र लिखवाता रहा था, then Ram had been making you write a letter. Like that, you can take lots of example. So let's we discuss in Hindi. What is the rule? Rule हमारा क्या है? Subject plus had been plus making plus object plus V1 plus main object. So subject रूप में हमने क्या लिया? I, we, you, he, she, they and Ram सभी क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा रूल क्या बोलता है? हैड बीन। सो हर एक सेंटेंस में क्या देख रहे हैं आप? सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, उसके बाद मेकिंग। ये मेकिंग क्या है? पॉजिटिव वर्ब है बिफोर के रूप में, क्योंकि हम लोग मेक पॉजिटिव यूज कर रहे हैं ना, इसीलिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट रूप में मैंने क्या यूज किया? यू एंड मी। मैं पहले ही बोला हूं, ये डिमांड के अनुसार, जैसा सब्जेक्ट डिमांड करेगा उसके अनुसार हम लोग यहाँ डालेंगे। तो मेरे सेंटेंस के अनुसार यहाँ यू और मी फिट बैठा, इसलिए मैं यू और मी का प्रयोग किया हूं। उसके बाद V1, तो V1 के रूप में मैंने क्या लिया? राइट। और यहाँ आप देख रहे हैं मेन ऑब्जेक्ट, तो मेन ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या लिया हूं? ए लेटर। इस प्रकार हमारा रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस मेन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं। यू कैन मेक लोड्स ऑफ सेंटेंस। हर एक पॉजिटिव में मैं राइट का ही प्रयोग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कैसे बदलता है उसको आप सीखिए, इसीलिए मैं राइट का प्रयोग करता हूं, ताकि परिवर्तन आपको देखने को मिले। सो I hope you are understanding how to make the sentence. So let's become in Hindi translation. I can say that I had been making you write a letter. मैं तुम्हें पत्र लिखवाता रहा था। We had been making you write a letter. हम लोग तुम्हें पत्र लिखवाते रहे थे। You had been making me write a letter. तू मुझे पत्र लिखवाता रहा था। He had been making you write a letter. वह तुम्हें पत्र लिखवाता रहा था। She had been making you write a letter. वह तुम्हें पत्र लिखवाती रही थी। They had been making you write a letter. वे लोग तुम्हें पत्र लिखवाते रहे थे। Ram had been making you write a letter. राम तुम्हें पत्र लिखवाता रहा था। Like that, you can take lots of example so that I can say मैं तुम्हें पत्र लिखवाता रहा था, हम लोग तुम्हें पत्र लिखवाते रहे थे, तू मुझे पत्र लिखवाता रहा था, वह तुम्हें पत्र लिखवाता रहा था, वह तुम्हें पत्र लिखवाती रही थी, वे लोग तुम्हें पत्र लिखवाते रहे थे, राम तुम्हें पत्र लिखवाता रहा था। Like that, you can take lots of example. I am taking one more example, so you have to careful. If I say that मैं तुम्हें हॉकी खिलवाता रहा था, then what will happen? I had been making you play hockey. We had been making you play hockey. You had been making me play hockey. He had been making you play hockey. She had been making you play hockey. They had been making you play hockey, and Ram had been making you play hockey. Like that, you can take lots of example. So
you have to try and try. I hope you are able to do about the causative of past perfect continuous tense. So how to remember? जिस वाक्य के अंत में वाता रहा था, वाती रही थी, वाते रहे थे, रहे, उसे causative of past perfect continuous tense का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें पत्र लिखवाता रहा था, हम लोग तुम्हें गाना गवाते रहे थे, राधा तुम्हें कथक नचवाती रही थी। रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस: सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 plus main object. For example, I had been making you write a letter, we had been making you write a letter, you had been making me write a letter, he had been making you write a letter, she had been making you write a letter, they had been making you write a letter, Ram had been making you write a letter. Like that, you have to take lots of example and practice in speaking, in writing. Then you can improve your English bit by bit. And today, again we will start the conversation, that means man-to-man talk. So let's start man-to-man talk, because without man-to-man talk we can't improve our English, because we have done speech and we are doing. So conversation is very important part in spoken. So let's start again man-to-man talk, that means conversation. आज का हमारा अलग टॉपिक है, बहुत छोटा है, सिंपल है, आपको समझ में आएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं टॉपिक बनाया हूँ। सपोज दैट मैं एक दुकानदार हूँ, मैं किताब बेच रहा हूँ और ये बायर्स है, मतलब खरीदने वाला है, यह बीए पास कर चुका है और खरीदने के लिए आया है। तो कैसे दुकानदार से टॉक करेंगे, मतलब मैन टू मैन टॉक कैसे होगा, उसी को आज हमको जानना है। सो फर्स्टली लेट्स वी नो अबाउट माय स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, आई एम राजेंद्र. Now I am a student of Architect Tutorial Simdega, and today we are going to do conversation with my sir. Okay, so let's start to do conversation, because conversation is important part for our life. So we are going to start. So please listen carefully and try to do better than us. So we are going to start. Hello sir, good afternoon. Very good afternoon. May I help you? Yes sir, you can help me. How can I help you? Actually I have to buy some book. Which type of book? Competition book. Which type of competition book? SSC, Railway and Banking. Very nice. So you tell first, what is your good name, please? My name is Rajendra Singh. Very good name. So in present, what are you doing? I just passed BA from Simdega College, Simdega. Don't worry, Simdega College, Simdega is very good degree college at Simdega. Thank you sir. So have you any idea? No sir, I have no any idea. Okay then, listen carefully. If you want to prepare for SSC, Banking and Railway, then you must take R.S. Agarwal for Mathematics, Ajay Chauhan for Reasoning and Lucien for GS. So would you like to see this book? Of course sir, I will see. Okay then, take it. Wow, all books are very nice. Really my dear friend, all books are very nice, because in present I am looking that most of the boys and girls are taking this book. So how much total price? No more, only 1000. Sorry sir, it is a very expensive for me, so any discount? Don't worry, I will give the 30% discount, so that you have to pay only 700. Thank you so much sir. So take your money. Thank you. Take your books. Thank you so much But sir. any more help, pen and copy, because lots of things are available in our store. Sorry sir, my money has finished, so I will take another day. It's okay, no problem. I am getting late, so can I go sir? Okay, you can go, because you are looking that I am so busy in my shop. But once again, thank you very much for giving good suggestion as well as good books. Most welcome and visit again. Thank you so much sir. Okay, like that you can do conversation. If you do like that of conversation, then I hope you will do better and better. And like that, if you talk with your friend, that means if you do man-to-man talk, then you can improve your English, because for the learning English, for the spoken, practice is necessary, so that whenever you get the chance to talk with your friend, with your family member, please talk. If you know or don't know, then you can improve your English. So I hope you are doing and you are enjoying our class. So thank you very much for watching my video.